I was waiting for others to join. Meanwhile, can you see my screen and hear me? Yes, Sohail. Yeah. Sohail, Yes. I also wanted to ask for that OneNote thing which you were showing yesterday. Can you just share it with me? The link is there in our WhatsApp group. You will have a read-only copy of that. In our Okay. WhatsApp group, in description, you will see a link for Google Drive. In that Google Drive, you see, let me open that. I'll share it on the screen. Give me a minute. Okay. Meanwhile, guys, anyone has any questions, please let me know. So this is the link you guys will be having. And once you click on that link, the link is in here. In WhatsApp group's description. You won't see all these folders, but you will see this folder and you will be landed here directly. Okay. Here I've kept some documents for you guys. The syllabus which we are going to cover, you can come here and check what all we have covered, what we are going to cover. ये सब इसमें details already दी हुई हैं. Other than Mhm. this, Excel file I have mentioned here. So if you are adding someone, please make sure to add their email addresses here. Because this invitation goes using this email address directly. Once we have this email address here, there's an API link to this and it picks up that email address and the invitation gets sent automatically. So this is one thing. Coming back to your questions, just give me a minute. Other than this, yeah, here's the notepad. I had one. Yes, this is the notepad we have. In this notepad, again, this is the group invitation for that WhatsApp. This is the link for same drive where exactly we are. And these are the recordings for Amjad. He's another trainer. He has taken one batch, 36 videos है कुछ, 2 hours each session. Almost इसी तरह के videos है. हमारे थोड़े ज़्यादा डिटेल और बेसिक्स है, वो थोड़े से हाई लेवल है, बट यस यू कैन वॉच देम. हेल्पफुल है काफ़ी. And this is the link for your OneDrive, the one which I'm using. Oh, sorry, this OneNote, Okay, okay. Thank the one which I'm using here. The only thing is you will see a read-only copy of this. If you want to make some amendments and changes, you can save your local copy and you can do that. you. Okay. Okay, guys, we'll wait for a minute or so and then we'll start. Meanwhile, anyone has any questions, please let me know. So yesterday we were talking about NSGs and rules we discussed. I hope you guys remember that. Anyone tried creating NSG or rules, anything? Yes, guys. Anyone tried and faced any problem? As I have been telling you, please try. I have given you accesses on portal, except for people who asked yesterday. I think Akib bhai has asked, Avnish. So that, except for those people, all of you have accesses on different portals. So please make sure you practice. Unless you practice, you are not going to learn this. Just looking at this video, attending this session is not going to help. Practice is must. Unless you go to portal and do practice, it is not going to help you. Okay, let's proceed and we'll see.
And thank you everyone who filled that feedback or survey. Though I haven't seen it yet, I'll get the copy of that or a result sort of or based on that in maybe 2-3 days. And if there are any feedbacks for me, I'll definitely try to implement them. Okay, so now let's go ahead and create a virtual machine and we'll practice NSG again. While I'm creating virtual machine, anyone has any questions, please let me know. Yes, guys, anyone who has any issues with NSGs, any concept, anything जो clear नहीं है NSGs के बारे में, कोई भी network security groups जो हम पढ़ रहे हैं इतना, इसके बारे में किसी को कोई भी डाउट है? Okay, who would like to explain what is NSG? Theoretical answer, please. जो इंटरव्यू में देना है आपको, the one which I explained yesterday. Yes, anyone, please. What is NSG? Yogesh, NSG, Afabhai, so Srishti, yes, Akib bhai, you can go ahead. yeah, NSG is a network security group which can be applied on NIC and subnets, and it can be accessed through protocols such as TCP, UDP, and one more is the Guys, even if you want to Yeah. read it, do that. I have no issues with that. If you want to Yeah, read and something, you can do that also. I'm not saying कि याद करके ही आंसर दो, but at least start giving answers. आप लोगों को आदत होगी इंटरव्यू में आंसर देने की. Yes, sorry, Akib, I didn't mean to interrupt. Yes, please yeah, no continue. problem. Yeah, and it's mainly used to create rules such as inbound or outbound rules on and then and you can also you cannot apply multiple NSGs on any resource, but otherwise you can, but you can apply a single NSG on multiple resources. Okay, what If I'm not else? wrong. Yes, what else? Yes, you're right. You're right till here. Yeah. What Yeah. else can you say about NSGs? How many default rules do we have? Yeah, it has 6 default rules. Okay. 3 in inbound and 3 in outbound. Okay. And also you cannot delete them since they're default rules. Okay. Yeah, and if you want to customize any rule, you can also create that. What are those rules which I cannot delete? They are the VNet inbound. I'm right. Am I correct, right? Yes, that's fine. Even if you're not correct, here the aim here is to start giving answers. Correction हम वैसे भी कर ही लेंगे, don't worry. Yeah, allow VNet inbound, then the deny all inbound rules. And one more is now first tell me inbound rules. What are 3 inbound rules? Default inbound rules. Yeah, there is the allow VNet inbound. First one, then deny all inbound rules. Okay. And one is I'm not remembering. Anyone else who remembers the second one? Load balancer. Yes, allow load balancer traffic. So these are 3 inbound. What are 3 outbound rules? So default outbound rules. Anyone, not necessary, Akib. Anyone can answer. Allow VNet outbound. Allow Azure load balancer. Do we have load balancer traffic in outbound rules, guys? No, we have internet outbound, I think. Right. In outbound, we have internet. And what is the third one? Deny all outbound. Right.
So now, as Akib said, I cannot delete it. Now my question is, internet is allowed. Now on a particular machine, I want to disable the internet access. So can I delete that rule, or what should be my approach? Okay, while I'm checking this, guys, while I'm checking this machine, machine is ready. I'll quickly give you one scenario. Anyone can answer, not necessarily Akib or Jafar or anyone. Anyone can answer. This is my VNet. This is my subnet. Under subnet, I have approximately 10, 12, 13, 9, whatever. These are the virtual machines I have. My subnet has NSG, NSG1. NSG1, which says internet is allowed. I mean, it has default. Let me, I'm not specifying anything. It has default rules. Okay. Ignore the spelling mistake, guys. So it has default rules. Now tell me one thing. The moment I say default rules, and now now if I ask you a question that this one, machine number 10, not sure if this is the 10th one. I'm just giving a number to this machine. Okay, so this is machine 10, let's say. So machine number 10, can this machine access internet? Yes. Yeah, Right. yes, it can. Now my requirement is that this machine should not be able to access internet. Machine 10 and machine 7. For some reason, I do not want these two machines to access internet. Other than this, all should be fine, everything. बाकी सब machine पे जो ऐसा ही होना चाहिए, सब कुछ सही है, बस ये दो machine का internet नहीं चलना चाहिए. So who could guide me? Detailed step by step. We are not going to portal there. If you want, I can go to portal as well. आप लोग steps guide करो and I'll go to portal also, or I can draw it here. Yes, You will create a new NSG with higher priority. So that will deny the traffic to these two machines and apply to these two. NSG with higher priority. Do we have priority at NSG level? No. The rule No, in NSG. role. The rule Exactly. in NSG with See, higher sometimes priority. you know the correct answer, but unnecessary interviewer आपको बस खींचने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ definitely पूछते हैं. I'm not doing it just for the sake of it या training में मजे लेने के लिए. I'm not doing that for this reason. This will happen definitely. The moment you say कि यार मैं VNet पे ये लगा दूंगा, NSG लगा दूंगा, interviewer will ask you, अच्छा VNet पे लगाओगे, he will ask you twice or thrice just to check कि सिर्फ आपका slip of tongue था या आपका concept clear नहीं है. ठीक है. So by listening to this answer, it is pretty clear to me that Sanmitra's concept is clear, but slip of tongue हो जाता है. So make sure वो होगा, ठीक है, उसमें कोई perfection नहीं आने वाला है, but make sure you explain it इतने अच्छे से कि अगर आपका slip of tongue हो भी जाता है ना, तो सामने वाला ये convince हो जाना चाहिए कि हाँ यार वो slip of tongue था, concept इनका clear है. ठीक है. Right. So yes, please. What should I do now? From step 1. You are right, but from step 1, I want what exactly I should be doing. Step 1 would be to create a new NSG. Okay, I'm creating one NSG. Where should I do that? That I'm not very sure now, to be honest. I'll have to practice it again. नहीं, how I'm not asking, where. While creating अच्छा, NSG, where? कोई क्राइटेरिया है या कहीं पर भी बना दो, कोई रिसोर्स ग्रुप का क्राइटेरिया है, किसी और चीज का क्राइटेरिया है, या wherever I like वहां पर बना दो? No, under that resource group, under that subnet. Do we create NSG under a subnet, or do we associate NSG on a subnet? चलो ठीक है, मैंने सबनेट पे. Are you saying I should create it on this subnet? Are you saying I should associate with this subnet?
Then my next question will be, can we have two NSGs on one subnet? You need to Yes, guys, create a anyone new can help. rule. It's not necessary. It is not a cross question session. Anyone can help, prompt, guide. Ultimate aim is कि सबका concept clear होना चाहिए. Yeah, you need to create a new rule. A rule where, okay, bhai? NSG 1 pe? Under the default, yeah, under the default NSG, yeah. It is NSG 1. It has all default rules. So now you are saying NSG 1 पे New- मुझको rule बनाना है. कहाँ पर बनाऊँ? Inbound पे या outbound पे? Inbound security rule Inbound पे पे, inbound, yeah. I hope you guys got my scenario. ये 15 machines है या जितनी भी होगी. ठीक है. First question I asked, can they access internet? They can. You guys answered. Now my requirement is these two machines should not be able to access internet. Internet कहाँ का rule है? Why did you think internet is allowed, guys? By the way, why did you answer that internet is allowed? What is the base of your answer? The default rule allows internet. Which default rule? We have two types of default rules. outbound one, right? Outbound, right? So if your internet is being allowed with an outbound rule, why do you think blockage के वक्त inbound बनाना पड़ेगा? Got it? Yeah. Got the point, guys? Okay. So now it's Yeah. clear that we are creating an outbound rule. So where do you want me to create an outbound rule? On NSG1, right? Okay, bhai, is that you're saying? Yes. Yeah. So on NSG1, you guys are asking me to create an outbound rule. Okay. And what should be the rule? Let me go to portal then. Maybe you can. Sir, Yes. can you please go back to the diagram? Sure. 1 minute. Yes. Yeah, can you, like these are the machines, 15 machines, for example, and what these two boxes are indicating? I'm sorry, I might have missed it. The black box and red box, what is that indicating? ब्लैक बॉक्स तो अपना वीनेट है, समझ लो. ठीक है. नॉट दैट उतना इस वाले प्रैक्टिकल में कोई खास उसका रोल है नहीं. जस्ट टू शो इट इज अ वीनेट. मेन कॉन्सेप्ट हमारा मेन कनेक्ट है यहाँ पर सबनेट और मशीन्स पे. सो दिस इज माय सबनेट. द रेड वन इज माय सबनेट. Subnet A, let's say. Subnet A has multiple virtual machines under that subnet. जितने भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now, so मतलब accounts का department है, and then you have some. Okay, let's say accounts का department है, fine. Accounts department पे मैंने एक NSG लगा रखा है. NSG apply होता है. Where do we apply, guys? CNG कहाँ NSG कहाँ apply होता है? NIC and subnets. NIC and subnet. So in this scenario, I told you we have only one subnet, one NSG at the subnet level. और उसमें कौन से रूल्स है मैंने बताया? सिर्फ डिफॉल्ट रूल्स है. तो द मोमेंट आई से डिफॉल्ट रूल्स है, मतलब मैंने आप लोगों को 6 रूल्स बता दिए जो इसमें है, राइट? डिफॉल्ट रूल्स का मतलब ये होता है कि यही रूल्स में होंगे. Now based on that, I asked if these machines can access internet. You guys answered yes. Why? Because default rules में से एक रूल होता है जो आपका ये अलाउ करता है, इंटरनेट अलाउ करता है. आउटबाउंड रूल्स में से एक है जो आपका इंटरनेट अलाउ करता है. ठीक है. Now the query is, or your ticket says that these two machines, they have sensitive data या कुछ भी reason है, these two machines should not be able to access internet. So what should be the process? Someone said, okay, I don't remember the पहले वाला answer क्या था. Okay, right. They said I should be creating another network security group and align it to this subnet. I think Jafar bhai was answering that, right? So my question was, can we assign two network security groups on one resource? The answer is no, you cannot. No. Subnet is one resource itself, and you cannot assign one NSG on two resources. Sorry, two NSGs on one resource. You cannot assign two NSGs on one resource. Okay. On the other hand, you can assign one network security group on multiple resources. That is possible. Like यहाँ पर कोई और सबनेट होता ना, यहाँ पर कोई और सबनेट होता,
provided they are in same region. तो आप ये जो है ये वाला NSG इस पे भी assign कर सकते थे. This is possible. Okay, but assigning two NSGs on one NSGs on one resource, it is not possible, right? So now I asked you what could be the steps or what will you do? Now Akib bhai is answering. I think Srishti is also on the same page. You guys are saying that we should create a new rule. So they are saying that we should create an outbound rule now. Okay, guys. So what kind of outbound rule do you want me to create? Is it clear, Avnish? Yes, yes, pretty much. वैसे थोड़ा वो इसके देखोगे ना वीडियोस VNet और सबनेट वाले तो क्लियर हो जाएगा वैसे ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, राइट? I'll go through that thing. So guys, here I am. Let's assume that this is the network security group I'm talking about. ठीक है, forget ये 4 इसमें है या नहीं है, outbound में हम देखते हैं. ठीक है, ये 3 ही है. So now you guys are saying I should add an outbound rule, right? Yes. Okay. What should be the source? Any. Okay. Port number? 80. Okay. 443. Okay. Destination? IP address in the. Whose IP address? Chalo, I'll type IP address. Whose IP address? Internet का कोई IP address होगा? It's a huge world. Facebook के 50 IP हो गए, Google के हो गए, and they keep changing. कितने IPs ब्लॉक करोगे आप यहाँ पर? Yes, guys. Source would be the IP address of that 7th virtual machine and 10th virtual machine. Okay, so you are saying source is 7 और बस ऐसे डमी IP एड्रेस ले रहा हूँ मैं, नॉट नेसेसरी कि हमेशा 7 का 7 और 10 का 10 होता है, ऐसे कुछ नहीं है. ठीक है. Correct. ओके. डेस्टिनेशन? Destination would be we are blocking the internet, right? Right. So destination would be star. Do we have an option to source port? Are you talking about? Yeah. Star का option यहाँ पर होता है. Destination any. If I put any, won't it block all traffic? मैं अपने within machine में भी बात कर पाऊंगा क्या? Forget internet. Intranet also works on जैसे आपका जो PeopleSoft payslip वाली ये होती है ना साइट, वो भी तो इन्हीं पोर्ट्स पे चलती है. जहाँ पे आप लीव अप्लाई करते हो ये सब करते हो वो भी इन्हीं पोर्ट्स पे चलता है. So if I block this port for any destination, is it going to work? Okay, guys, let's not waste time and then I'll guide you now. Just give me a minute. And meanwhile, you guys check कि कुछ समझ में आ रहा है क्या? I'll be back in a minute and then we'll start creating this rule. Okay, guys. So let's start with this. This approach, it might work, but guys, we will never ever use this approach. What will happen here?
your computers, your servers will not have single IP. I have told you. और single भी नहीं होता और कई बार static भी नहीं होता है. Static का क्या मतलब होता है? Fixed. And there is another term called dynamic. Dynamic का क्या मतलब होता है? Which keeps changing. तो इनका IP एड्रेस जो है मे बी आज 7 और 10 है, कल ये 7 के जगह 8 हो सकता है और 9 हो सकता है और IP कुछ भी हो सकता है. अपने राउटर से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके देखो. टुडे यू विल हैव अनदर IP, टुमारो यू विल हैव अनदर IP. डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करोगे, एक अलग IP मिलेगा. सो दैट IP कीप्स चेंजिंग, राइट? और बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा. सो वी विल नॉट डू दैट. इसमें हम कभी नहीं करेंगे, इन रूल्स को हम कभी नहीं छेड़ रहे. ठीक है? सो व्हाट इज द अदर मेथड? What is the other method we have, guys? Can't I have another NSG? मैं एक और NSG बनाता हूं. ठीक है? NSG2. Let's say this is my NSG and this is NSG2. This is NSG2. और इसमें मैं आकर सिर्फ अपने आउटबाउंड रूल्स पे इंटरनेट को ब्लॉक कर देता हूं. And I will assign this NSG to this machine and to this machine. Now what will happen? जैसे यहां से कोई आउटबाउंड ट्रैफिक इस मशीन से जाएगा इंटरनेट के लिए, हाउ द ट्रैफिक विल फ्लो गाइस? यहां से जाता है तो ये डायरेक्टली यहां पर नहीं जाएगा. देन इट विल गो हियर फर्स्ट एंड देन इट विल गो हियर, राइट? इट विल गो हियर इस एनएसजी के थ्रू एंड देन इट विल गो दिस एनएसजी के थ्रू. सो ठीक है, इस एनएसजी पे तो आउटबाउंड रूल में अलाउ कर रखा है इंटरनेट को, बट ये रिक्वेस्ट यहां तक पहुंचेगा भी क्या? इफ दिस एनएसजी इज ब्लॉकिंग दिस रिक्वेस्ट, will this request even go till here जहां पे आपने allow कर रखा है, right? So instead of adding rules to this NSG, what do we do? We'll create another NSG जहां पर हम इंटरनेट ब्लॉक करेंगे और उसको सिर्फ ये दो सर्वर्स पर हम अटैच करेंगे. Is it clear, guys? और इंटरनेट भी ब्लॉक नहीं होगा क्या भाई इसमें? Sorry? इंट्रानेट रूल्स पे आते अगर हैं, इंटरनेट रूल्स पे आते हैं कि रूल्स को कैसे डिफाइन करना है. विल कम टू दैट. रूल्स पे हम आ रहे हैं. इज इट क्लियर? बट हाउ विल यू, एनएसजी का प्लेसमेंट क्लियर है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का प्लेसमेंट किस तरह से होगा? Yes. Yes. नाउ इसकी जगह अगर ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल नहीं लेते फिर. ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर है, राइट? आप लोगों को वन मोर बेनिफिट व्हाट विल हैपन कि टुमारो इफ दिस क्लाइंट सेज कि यार 7 और 10 तो ठीक है, मुझको आप ये जो एग्जांपल के, ये मशीन नंबर 9 है, ये 6 है, ये 4 है. नाउ ही इज सेइंग कि इनको भी ब्लॉक करके दो. अगर आप यहाँ पर रूल बनाओगे ना तो उसको एवरी टाइम यू विल हैव टू गो एंड चेंज दोस आईपीज और एडिट दोस आईपीज, वो सब करता ये होना पड़ेगा आपको. एक लेंदी प्रोसेस और थोड़ा सा इनसिक्योर टाइप का होगा वो प्रोसेस. थोड़ा सा भी आईपी यहाँ वहाँ चेंज हो गया तो आपने जितनी मेहनत की है उस पर अप्लाई नहीं हो रही है. ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव एनएसजी, व्हाट विल यू डू द मोमेंट दिस रिक्वेस्ट कम? इसके बाद क्या करोगे आप? व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू? ये हमारे पास will attach the NSG to 4, 6 and 9. एग्जैक्टली इसी एनएसजी को यहाँ पर अप्लाई कर दो. बाकी सब कुछ रूल बना हुआ है एज इट इज है, बस क्या करना है इसके. बाय द वे किस कंपोनेंट पे अप्लाई होता है एनएसजी व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर? Nick. ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस कि निक क्या है. ओके, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल्स. So what would be the source here? First thing, source will be any. ठीक है, पोर्ट्स को आप ये भी कर सकते हो. और अगर आपको चाहिए सबसे बेस्ट चीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना रूल कैसे बनाना है, सो जिस रूल को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो ना उस रूल्स को उसी रूल को देख लो. अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है? अलाउ इंटरनेट. तो ये सारी चीजें जो है एज इट इज कॉपी कर लो, इस अलाउ को डिनाई कर दो. ओनली 2 चेंजेस विल बी हियर. Who can quickly tell me? बाकी ये सारी चीजें वैसे ही होगी except 2 changes. I mean, I'm telling you the Priority and action. easy method. Exactly. What would be the priority? Anything between 655 6550 1 से नीचे.
यस जो भी है, लेकिन उसका रेंज दिया हुआ है 100 to 4096 उसके बीच में, 96 Yes. एंड एक्शन विल बी deny. Deny. डिनाइड। ठीक है, मुझको बनाकर देने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर सामने ही है। पोर्ट एनी कर लो, प्रोटोकॉल एनी कर लो, सोर्स एनी कर लो, डेस्टिनेशन आप लोग यहाँ पर इंटरनेट सेलेक्ट करोगे। द मोमेंट यू सेलेक्ट इंटरनेट, तो सिर्फ ये इंटरनेट ट्रैफिक को ही ब्लॉक करेगा, आपकी इंट्रानेट ट्रैफिक को नहीं ब्लॉक करेगा। ठीक है गाइस, anyone has any issues? Let me see if we are able to see that port any destination any. Okay, where do you see this internet वाला, यहाँ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ जो ये दिख रहा है आपको इंटरनेट डेस्टिनेशन इंटरनेट, ठीक है, मैंने बोल तो दिया आप लोगों को कि आप इसको ऐसे ऐसे ये करो। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो यू विल बी एबल टू सी बोथ ऑफ देम। ठीक है, आई टोल्ड यू एन इजी मेथड एंड गाइस प्लीज गो अहेड एंड जो भी वहां पर रूल है उसी को फॉलो करो, बस प्रायोरिटी कम कर दो, अलाउ को डिनाई कर दो। ये सेट फाइन, आई एम गोइंग हियर, आई गो हियर, व्हाट विल आई डू? सोर्स क्या है यहाँ पर? सोर्स है एनी, तो आई एम सेलेक्टिंग एनी। सोर्स पोर्ट क्या है इसमें? इफ यू वांट टू सी यू विल हैव टू गो इनटू दैट रूल एंड चेक, बट यहाँ पर एनी है, फाइन। ठीक है, देन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में ये इंटरनेट दिख रहा है यहाँ पर। डू यू हैव एन ऑप्शन फॉर टू सेलेक्ट इंटरनेट? No. उसके ऊपर जो है वर्चुअल नेटवर्क भी दिख रहा है आपको, राइट? यहाँ पर जो है एक और रूल जो है ना, अलाउ इनबाउंड वाला, इसमें वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन में वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा है। डू यू हैव दैट ऑप्शन? सोर्स में वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा है क्या आपको कहीं पर? No. नो। No. तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? व्हाट डू यू थिंक, हु कैन गेस और एनीवन नोज? Maybe someone from old batch, previous batch. Do we have Kumail? No, Kumail is not there. Jafar bhai, you or Tabrez? Why don't I see this internet or virtual network? How can I get that? Not sure, bhai. No problem. So yesterday we discussed any NIP address, right? Today let's talk about service tag. सर्विस टैग कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है। द मोमेंट यू सेलेक्ट सर्विस टैग, बस एक आपको एक नया लिस्ट आ जाता है यहाँ पर कि आपको वर्चुअल नेटवर्क से ये करना है, योर लोड बैलेंसर से। नाउ यू अंडरस्टैंड ये लोड बैलेंसर कहाँ से आया, वहां पर जो एक Yes. लोड बैलेंसर कहाँ पर है बाय द वे? लोड बैलेंसर कहाँ देखा था हम लोगों ने? Inbound. rules. इनबाउंड रूल्स में। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि लोड बैलेंसर कहाँ से है, एक्शन ग्रुप क्या है हम देखेंगे, एपीआई मैनेजमेंट क्या है, ये सारे बस कुछ नहीं है, सर्विस टैग्स है। किसी भी रिसोर्स पे आप सर्विस टैग लगा दो, वो इसके अंडर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो द मोमेंट यू सेलेक्ट इंटरनेट, इट इज अज्योर्स व्हाट डू यू से एल्गोरिथम जो डिसाइड कर लेता है बहुत परफेक्टली कि किस तरह से सिर्फ इंटरनेट को ब्लॉक करना है। ठीक है, सो सोर्स एनी, क्योंकि हम दो ही मशीन पर लगाने वाले हैं, राइट? सो दोनों भी मशीन हमको ब्लॉक करने हैं। पोर्ट एनी, दैट इज फाइन, और हमको स्पेसिफिक अगर होना है तो भी ठीक है। Why are we happy with any? क्योंकि any करते हैं तो 3389 भी ब्लॉक कर देगा, 25 भी ब्लॉक कर देगा, 66, 67 ये सारे पोर्ट्स ब्लॉक कर देगा। By the way, I have shared an image with you guys to at least read a few ports जो बहुत commonly use होते हैं. So when I say 25, 66, 67, you should know कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ. So please go through that. If you do not have, Google it. Frequently use port numbers and ports, you will get that. ठीक है, I am still willing to take this chance. Why? बिकॉज डेस्टिनेशन में मैं क्या यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंटरनेट, तो ये उसी वही पर बस इंटरनेट की ही ट्रैफिक को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, आरडीपी इज नॉट एन इंटरनेट वाला, आरडीपी चलता रहेगा। यहाँ पर कस्टम आई विल लीव इट एज इट इज। डेस्टिनेशन पोर्ट मैं यहाँ पर भी स्टार कर देता हूँ। प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी सारे मुझको ब्लॉक करना है। प्रायोरिटी आई हैव टू मेक श्योर कि इससे कम रखो, वैसे भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास इससे ज्यादा रखने का, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर आई कैन हैव इज 4096।
That is the number I can have. Here. If I type something else, वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है. So there is no other option. तो मैं इसको 200 भी रख सकता हूँ. नाम अपने हिसाब से कुछ भी मैं दे दूंगा. What does it say in? Okay, I think lower में चाहिए था उसको. I'll write the description. Action should be denied. Yes, I'll write the description and action should be denied here. If you want, you can write the description, anything, and this is done. So now same machine, this machine of yours, जिसको भी आपने लगा दिया, they will not be able to use internet. Is it clear, guys? Anyone has any issues? Yes, guys. Anyone who did not understand or anything, please let me know now. See, the rule is there. इनबाउंड में इंटरनेट ब्लॉक किया तो आरडीपी दे सकते क्या? इनबाउंड में इंटरनेट कैसे होगा? अच्छा, Do you understand the inbound में इंटरनेट ये नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट को when you are selecting a category, a service tag, तो इंटरनेट की कैटेगरी Azure ने अलग ही बना रखी है. इनबाउंड में उसको कंसीडर ही नहीं करेगा वो. Got it? So now let's take remote of this machine. This is about to finish, guys. I will stop it and start it without any break. Should be fine. Okay, I am able to take RDP to this machine. See. Okay, stopping the session and we are starting without any break, same link.